Yes, I have it, ma'am. Namaskar and a very good morning to the eminent dignitaries on stage, our Honorable Minister, Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, and Department of Pension and Pensioners' Welfare, Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Secretary, Department of School Education and Literacy, Director General, Indo-Tibetan Border Police, and Director General, PIB, Joint Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, our esteemed Special Campaign Nodal Officers, the Nodal PG Officers, and Nodal Public Grievance Appellate Authorities of all the central ministries and departments, distinguished officials present in this hall, and the respected members of the press and media. It is indeed a great privilege for me today to anchor and welcome you all to the press conference on mid-campaign progress of Special Campaign 3.0. The chief guest for the event today is Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of State, Independent Charge of the Ministry of Science and Technology, Minister of State for Prime Minister's Office, Minister of State for Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Minister of State for the Department of Atomic Energy and the Department of Space. As we commence the event, we would like to welcome our Honorable Minister with a bouquet. I would request Secretary. Okay, thank you, sir. Thank you. I would now like to request Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Department of Pension and Pensioners' Welfare, Shri V. Srinivas Ji, to kindly give the welcome address and make a presentation on the mid-campaign progress of the Special Campaign 3.0. Respected Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh Ji, my distinguished colleagues, Shri Anurag Jain Ji, Sanjay Kumar Ji, Shri Anish Dayal Ji, Rajput Ji, distinguished nodal officers, members of the media, we are happy to present to you the mid-campaign progress review of the Special Campaign 3.0, launched by government from October 2nd to 31st, with the objective of institutionalizing Swachhata and minimizing pendency in government. This has been the journey so far. The Special Campaign 1.0 was held in 2021, 2.0 in 2022, and then it was taken up on a continuous basis, on a monthly basis. So far, we have, the campaign has resulted in cleaning up of a number of office sites, and also in terms of freeing up office space, and earned a lot of revenue for government. The cumulative figures are quite voluminous and significant. More than 600 crores of revenue has been earned. The campaign has been held in the last 2.5 years in more than 2 lakh campaign sites, and about 60 lakh files have been weeded out as part of the campaign, resulting in 2.5 lakh square feet of new office space that was created. Next, please. Encouraged by the, next slide please. Encouraged by the progress that we have witnessed, the Special Campaign 3.0 has been launched from October 2nd to 31st with the, and it is to be conducted in all attached subordinate and field offices, missions, overseas missions, defense establishments, as also in PSUs, and to be adopted by all attached subordinate and autonomous bodies of Government of India. Next please. The campaign began with the launch and a media briefing held by the Honorable Minister of State for Personnel on 14th of September in this very hall. And the Committee of Secretaries met on 16th September to identify the modalities of implementation.
The Honorable Minister had visited a number of offices personally, providing leadership to the campaign. He visited DOPT, CBIC, CBDT and Revenue in North Block, the South Block offices, as also the DRPG offices to provide leadership and guidance on what we should be doing. This is how the mid-campaign progress looks. So far, we have completed 1.96 lakh square feet of 1.96 lakh cleanliness campaign sites. The space freed is 103.76 lakhs, and so far 186 crores have been earned from the campaign. So this is, as you can see, more than 3.5 lakh public grievances have also been redressed, and 28.5 lakh files have been reviewed. Next, please. The campaign is monitored on a portal, and this is the dashboard. It covers thousands of offices, and nodal officers are here who have been participating in it, and the outreach is through a number of PIB statements and through the campaign hashtag. Next, please. Senior cabinet ministers have participated in the campaign. Ministers of state have participated in the campaign. Secretaries to Government of India have played a leadership role with their constant reviews, and decisions of the Committee of Secretaries and the government have been implemented in a structured manner in the last 2 weeks of the campaign period. Next, please. In terms of the outreach, next slide. In terms of the outreach, the campaign has had massive outreach. 185 PIB statements have been issued in the last 2 weeks. Over 30,000 social media posts have been issued, 650 infographics. For those of you keen on following the campaign, the hashtag is Special Campaign 3.0. We are witnessing a massive engagement rate, and for a G2G campaign, this is very encouraging. Next, please. These are some of the best practices that have come in. The Honorable Minister had launched the Intelligent Grievance Monitoring Dashboard using artificial intelligence in the DRPG. The Finance Minister had launched the IGOT platform on CPgrams in CBDT. We also had the Agriculture Minister launching the vertical gardens at Krishi Bhavan. MOS had also visited CSIR and launched the recycling on wheels. We had the Department of Education reporting check dams from plastic waste. Telecom has reported painting competitions for children. Next, please. State Bank of India brought in a number of schemes, particularly to reach out to pensioners. Plastic bottles were used to launch a campaign against single-use plastic by Ministry of Skill Development. We also had Shramdan practices that were witnessed in Department of School Education. Secretary School Education would be briefing you on this. Department of Posts carried out a major upgradation of post offices. Wall paintings were taken up. Digital campaigns were taken up by Department of Posts. Department of Telecom also launched an independent grievance monitoring dashboard. Then Culture set up a tree house to promote awareness on nature. Then lectures on health and well-being were taken up in Department of Land Resources, as also in the Ministry of Health and Family Welfare, in all the All India Institutes of Medical Sciences. Further, World Heritage sites have been taken up under the campaign. Kabad Se Kalakriti has been developed in several Maharatna and Navratna PSUs, and from freed office spaces, new gyms have been set up. This is one of the gyms that has been set up in Ministry of New and Renewable Energy. We also had Swachhta pledges being taken up, roads being used, developed for single-use plastic, and creches that have been established. Next, please. A series of tweets you'll find that have been issued. The Honorable Prime Minister has tweeted on the campaign, as also all the leading cabinet ministers and ministers of state and secretaries have participated. Next, please. These are some of the clips from the tweets that have been issued. Next. Next, please. Next, please. So this is what I had to share with you. The campaign in the mid-campaign progress is a phenomenal success. We were initially targeting 1 lakh sites. We have already taken up more than 1.97 lakh cleanliness campaign sites.
186 crores of revenue has been earned, and more than 37 lakh office files have been weeded out. So when you see the cumulative numbers, about 788 crores has been earned from the campaign, with 4 lakh office space being freed, 4 lakh square feet of office space being freed, and the cleanliness campaign being held in almost 3.5 lakh office spaces. So it's been a very comprehensive pan-India campaign which is witnessing a massive response. Thank you very much. Thank you, sir, for your warm welcome address and enlightening us with the status of progress on the Special Campaign 3.0 at week 3. I would now like to invite everyone to watch a film on the mid-campaign progress of Special Campaign 3.0 and witness the achievements made during the current Campaign 3.0 as on 25th October 2023. I'm sure this film will motivate us to complete another path-breaking and successful campaign this year. पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साफ सुथरे कार्यस्थल और बिना बाधा के काम, यही पहचान है पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की। ये सरकार पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को बदल नए दौर की नई कहानी लिख रही है। अब सरकारी कार्यालयों में गंदगी नहीं बल्कि सफाई के ऐसे उपक्रम दिखाई देते हैं जो पुरानी कार्य संस्कृति से परिचित लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। सरकार ने साफ सफाई के काम को संस्थागत रूप देते हुए स्वच्छता अभियानों की शुरुआत की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले महीने की 29 तारीख को डिजिटल DAPRG विषय वस्तु के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में विशेष अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल को बढ़ावा देने, सार्वजनिक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने, जन शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीक के इस्तेमाल को लागू किया गया है। स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 में 2.27 लाख स्थलों को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.0 में 1.101 लाख स्थलों का चयन किया गया था। 2.0 में 90 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया, तो वहीं 3.0 में 100 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है। 3.0 में 400 करोड़ रुपए का राजस्व कबाड़ के निस्तारण से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं 2.0 में 372 करोड़ रुपए की कमाई इसके माध्यम से की गई। स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत 14 अक्टूबर तक 1.4 लाख से ज्यादा स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जा चुका है। वहीं 32.5 लाख वर्ग फुट से ज्यादा स्थल को खाली कराया गया है, तो 117 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व भी इकट्ठा किया गया है। विशेष अभियान 3.0 में मंत्रालयों, विभागों और उनके संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा सेवा प्रदाता या सार्वजनिक इंटरफेस वाले क्षेत्रीय बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। पिछले महीने की 14 तारीख को स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के लिए समर्पित वेब पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। DAPRG ने स्वच्छता अभियान के लिए 300 सर्वोत्तम प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसे सभी सरकारी मंत्रालय और विभाग लागू कर रहे हैं। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने विशेष अभियान 3.0 के तहत PSU ने कबाड़ से कलाकृति की नीति को अपनाते हुए खनन स्क्रैप सामग्री को सुंदर प्रतिमाओं में बदलकर इस अभियान को कचरे के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के अवसर के रूप में लिया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आयकर विभाग के कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 चला रहा है। विभाग ने
सार्वजनिक शिकायत निवारण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल ई लर्निंग पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपने कार्यालय को भव्यता देते हुए मुख्य द्वार पर वर्टिकल गार्डन लगाया है। आज रेलवे के कायाकल्प की चर्चा भी हर ओर है। पिछले 2 अभियानों की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाला रेल विभाग इस बार भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी तरह स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण किया गया। चेन्नई स्थित ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर GARC ने स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। स्वच्छता अभियान 3.0 तेज गति से अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 स्वच्छता अभियानों के दौरान सरकारी कार्यालयों में लगभग 90 लाख वर्ग फुट प्रमुख स्थान को साफ किया गया है और उन स्थानों को सार्थक उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा 2021 से अब तक 600 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक 10.5 लाख से ज्यादा फाइलों का निस्तारण किया गया, तो वहीं 36 लाख से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई की गई। स्वच्छता की ये गति ना तो थमी है और ना ही रुकी है। इसे और तेज करना सरकार के बड़े लक्ष्यों में शामिल है। आइए आप और हम सभी मिलकर स्वच्छता अभियान 3.0 को सफल बनाएं। Department of School Education and Literacy have covered as many as 25,951 sites in the special campaign 3.0 as on date. And so, it is indeed with great pleasure I request the Secretary, Department of School Education and Literacy, Shri Sanjay Kumar ji, to kindly share a presentation and address the audience. Thank you. Honorable Minister of State, Dr. Jitendra Singh ji, my esteemed colleagues, Secretary MORTH, Secretary DAPRG, DG ITBP, all our colleagues who are in this hall, and members from the media. Starting on Gandhi ji's Jayanti on the 2nd of October, this is special campaign 3.0. So for us who are part of the school and we are running these schools across the country, Swachhta is extremely important. Our children are spending almost 220 days in a year in our schools. And if they see and work in a very Swachh environment, it will become a habit. It will become a habit and you'll internalize it as something which is normal. And for us also who are in the government, I think for most of our wakeful hours, we are in the office. And if the office is clean, then it impacts our mental well-being. But having said that, next please. So the Department of School Education and Literacy is implementing this scheme through all our outreach centers, which are primarily schools. And we are doing it with the kind of expectation which is there with us, that Swachhta hi seva hai. Next please. So last year we had done it in a limited basis. This year we have scaled and I'll be coming back. But just to give a interim achievement which we have achieved till date is that in public grievances we have reached about 91%. Public grievance appeals, we have done all 100%. Cleanliness campaigns, we had proposed it 30,934 and we have done 84%, and we still have a week to go, so I'm sure that we will achieve 100% in all our target. Files we've been reviewing, we have done 84%, and the files which have been put up for review also, there has been very appreciable achievement. Next. Next please. So last year we had done it in 1,257 institutions. This year we increased it to 30,934. And these are primarily our Kendriya Vidyalayas, our Navodaya Vidyalayas, and the schools which belong to CBSE. So as of now, we've had more than 8.5 lakh people who've been part of this campaign directly. Next, please.
we are spreading it all across. So be it the border areas, the LWE district, hilly areas and desert areas. Areas where there is little traction, few people go, so we thought that we should pay special emphasis on all these institutions. And this is a picture from Ladakh showing Rigzung Public School, Ladakh. So there the children are doing it. Next, please. One of the important interventions we run in Samagra Shiksha is that every school should have an eco club. And we took this upon ourselves that we should start creating these eco clubs in our schools so as to make children very much aware of what Swachhta is, what cleanliness is, and to a very large extent, a large number of things which are happening all across is also related to climate change, global warming. So if children are made aware of these things, it would again become part of their knowledge base. So we've been creating eco clubs, and we do hope, even if the campaign ends on the 31st of October, we would be continuing it. So by the time we come back next year for the version 4, all our schools would have a eco club. And we've been encouraging our students to establish compost pits and generate compost and dispose of the scrap. The basic idea are the 3 R's: reduce, reuse, recycle. And I guess recycling has always been part of the Indian culture. We have always recycled everything, and the West now is learning a lot from us that how to reuse just about everything which is there for daily use. Beautifying switchboards, trash to treasure, teaching students to create art and craft from waste and discarded material. And the previous presentation also, Secretary DAPRG showed how from waste we've been creating artifacts and objects of art and designing functional pieces from salvaged items. Next, please. Since we are dealing with children, we are reaching the masses through group songs, cycle rally, wall paintings, poster designing, and we've been paying special emphasis on the social media. So till date, we've had 842 media interventions on X, and then on Instagram also 472. Because of paucity of time, I'm not being able to show you a Swachhta song which has been composed by our students of KV at Ernakulam. But then this Swachhta song also is being played in almost all the school, and we've been encouraging them to highlight and to internalize it through these songs. The best practices, I would just mention a couple of things. One is the Divine Wall, and this is at KV Berhampur in Odisha. So students went on to the beach, they collected 5,500 plus plastic bottle caps. And from these plastic bottle caps, they have created a 400 square foot mural of Mahaprabhu Jagannath, Mahaprabhu Balbhadra, and Ma Subhadra. And this mural is there on the wall of the PM Shri Kendriya Vidyalaya, Berhampur in Bhubaneswar region. Back home, at where we are, the walls are looking a little blank, but in about a week's time, there will be murals and there will be paintings from the kind of interventions which we are making through the national education policy. So one more thing which I would want to mention, that we are using Vidyanjali. Vidyanjali is an app in the education department, and anyone who wants to give away a few things can go on to the Vidyanjali app and give these things to our schools so it might find usage there. And one of the good things is the Cabinet Secretariat is giving us 87 computers, and we have requested all the secretaries in Government of India to use this app effectively. In Shastri Bhavan, we run a creche. And this year, we are revamping that creche, and we are converting it into a Bal Vatika, which is as per the vision of the national education policy. And once it is ready, I shall urge all the inhabitants of Shastri Bhavan to use this Bal Vatika. So a lot of things are being done, and I think this is just an interim report. And as and when we finish this campaign on 31st, I think it will just be an official end, but the drive shall continue even after that. Thank you so much.
Thank you, sir, for your encouraging address and presentation. The Special Campaign 3.0 has been conducted across all battalions of the Indo-Tibetan Border Police, adopting the saturation approach. Tweets across remote sites such as Tikse in Ladakh, Lingdum in Sikkim, and Jeling in Arunachal Pradesh have also been issued by the Indo-Tibetan Border Police. It is in this context, and it is indeed an honor to request the Director General, Indo-Tibetan Border Police, Shri Anish Dayal Singh Ji, to kindly share a presentation and address the gathering. आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, Honorable Union Minister of State, secretaries from the Government of India on the dais, and friends from the media. Next, please. ये पहले बताया जा चुका है कि ये जो पहल है 3.0, इसमें क्या क्या इसके टारगेट हैं और इस पे क्या हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा गृह मंत्रालय के बिहाफ पे कि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस पे बहुत क्लोज मॉनिटरिंग भी हो रही है समय समय पर, और यूनियन होम सेक्रेटरी भी इसकी मीटिंग रेगुलर लिया है। उसके नतीजे भी कुछ अच्छे आए हैं इस कैंपेन में कि गृह मंत्रालय में मंत्रालय के अलावा जो उसके नीचे हमारे सारी CAPFs, CPOs और यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन सब उसके नीचे आते हैं, तो 7 CAPF, 8 CPOs और यूनियन टेरिटरीज़ में 10 लाख से ऊपर जो हमारे कर्मी हैं, जो 1400 लोकेशंस पर फैले हुए हैं, उन सब ने इसमें बहुत ध्यान लगा के इस कैंपेन के पार्ट हैं। डेली अपडेट्स पोर्टल पे किए जा रहे हैं और इसके नतीजे जो हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम इसका एक ओवरव्यू देखें तो लगभग 3000 पब्लिक ग्रीवांसेस में से 85% का निपटान किया गया है, और उसके बाद जो अपील्स भी फाइल हुई उन पे भी 75% का निपटारा हुआ है। लगभग 90,000 फिजिकल फाइल्स, जो कि भारत सरकार या किसी भी सरकारी संस्थान में एक बहुत बड़ा इशू रहता है, उसकी स्टोरेज और उसको वीड आउट ना कर पाने का जो एक प्रॉब्लम रहती है, उसमें से ये बताते हुए हर्ष होता है कि इस कैंपेन के अंतर्गत लगभग 82% फाइलों को रिव्यू किया गया और उसमें से आधों को वीड आउट भी कर दिया गया इस छोटे से समय में। ई फाइल्स भी जो डिजिटल स्पेस है उस पर भी ध्यान देते हुए लगभग 70% से ऊपर ई फाइल्स को भी रिव्यू किया गया है, और जो फिजिकल फाइल्स में थी उसमें से करीब 450 सर हमने आइडेंटिफाई कर ली है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को भी हैंड ओवर करने के लिए, उनका महत्व देखते हुए। इस सब प्रयास के बाद लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट स्पेस फ्री हुई है, और जो गृह मंत्रालय का टारगेट था उससे ये 93% हमने अपना टारगेट अचीव भी कर लिया है। लगभग 5,500 क्लीनलीनेस कैंपेन्स लॉन्च हुई हैं देश भर में बाय वेरियस फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। और इसके अलावा सर एक गृह मंत्रालय की पर्टिकुलरली माननीय गृह मंत्री की पहल के अंतर्गत लगभग 4.70 करोड़ प्लांट्स भी हम लोग ने सब जगह प्लांट किए हैं, जो कि एक पर्यावरण में और क्लीनलीनेस कैंपेन का एक तरीके से एक्सटेंशन है जिसमें ये मदद मिल रही है। सर कुछ उदाहरण जो अच्छे काम किए गए इस दौरान, इसमें सर अगर हम देखें आसाम राइफल ने नागालैंड में वेस्ट सेग्रीगेशन और डिस्पोजल की एक बहुत अच्छी पहल की है पब्लिक को इन्वॉल्व करते हुए। इसी प्रकार BSF ने जो अपनी कैंपेन साइट्स पे जो काम किया उसके चित्र आपके सामने हैं। ITBP ने बहुत पहल की है, उसमें एक चीज़ जो है ये सेल्फी पॉइंट देश में बहुत जगह क्रिएट किए गए हैं। सशस्त्र सीमा बल ने अपने स्पेस मैनेजमेंट में महिपालपुर दिल्ली में जो सफाई की है, इस तरीके के बहुत उदाहरण सामने आएंगे। NSG ने सर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क पे काम कर रहे हैं अरावली रेंज में।
ये इसकी सफाई में एनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि सर वहाँ पे एक विलायती कीकड़ जो है एक बहुत ज़्यादा उगता है, तो उसको हटाकर डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करने हैं नेटिव प्लांट से, जो हमारे यहाँ देश के ही अंदर के प्लांट्स हैं उनको लगाकर। तो एक जापानीज़ टेक्निक मियावाकी सिस्टम को इस्तेमाल करके इस पे एक बहुत अच्छी पहल एनएसजी ने की है। इसी प्रकार सीआईएसएफ ने भी सर अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक डंप यार्ड था, उसको अडॉप्ट किया और अब उसको पूरा ग्रीन जोन, ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट किया है। आईटीबीपी की तरफ से सर ये जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस है कि नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर बहुत एक तरह से कैंपेन के रूप में इस पे काम चलाया जा रहा है, जिससे कि ये चीज़ इस पे ध्यान दिया जाए। और अगर हम अमरनाथ यात्रा का अमरनाथ यात्रा का देखें सर, तो इसमें लगभग 2000 किलो आईटीबीपी इस पे डिप्लॉयड थी सर, दोनों एक्सेस पर, बालटाल और चंदनवाड़ी एक्सेस पर सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उस ड्यूटी के दौरान उन्होंने लगभग 2000 किलो प्लास्टिक वेस्ट वहाँ से रिमूव किया जो डेली क्रिएट होता था, और उसको फिर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने और श्राइन बोर्ड ने एनजीओज़ के साथ एक टाई अप कर रखा था, तो उनको हैंड ओवर करना, जिससे कि वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो उस तरह से जाए, और जो नहीं है उसका भी किस तरह से डिस्पोजल होना है, एक पूरे सुचारू रूप से वो कार्य किया जाए, इसके ऊपर बहुत काम हुआ। सिमिलरली सर ये आईटीबीपी का ये ध्येय रहता है कि जिन भी इलाके में ये पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, चाहे लॉन्ग रेंज हो, शॉर्ट रेंज हो, जहाँ भी इनका एक ये टास्किंग का पार्ट है कि आते जाते समय जितना भी कोई भी वेस्ट मटेरियल दिखता है जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकता है, उसको वे वहाँ से उठा के ले आते हैं, और फिर उसको अगेन हमारे अपने सिस्टम है इंटरनल कि इनको कैसे वहाँ से रिमूव किया जाए, जिससे कि ये वापस उसमें पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करें। इसी तरह एसटीपी बनाए गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सर लगभग 99 बना चुकी है आईटीबीपी जगह जगह, 28 और कंस्ट्रक्शन में है। और टारगेट आज की डेट में हमारा जो है वो है 11,500 किलो लीटर पर डे का हम सीवेज ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी है। इससे फ़ायदे भी बहुत हैं सर इस पहल से। ये नहीं है कि सिर्फ ये एक सरकारी आदेश है तो उसको किया जा रहा है। इससे आईटीबीपी जैसी फोर्स और जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं उनकी आउटरीच पब्लिक में, गाँव में, बॉर्डर पर रहने वाले निवासियों के साथ इनकी आउटरीच बहुत बढ़ रही है। वे उनके साथ उनका संपर्क इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि ये काम मिलकर होता है। हेल्दी लिविंग के टारगेट के अंदर और कैप्शन के अंदर हमने सर मिलेट्स का उपयोग सारे सीएपीएफ्स ने मिलकर, अगेन बहुत इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करके हम लोग इसमें एकदम दृढ़ संकल्प है पूरे फोर्सेस का और गृह मंत्रालय का कि 30% सारे फोर्सेस में कंजम्पशन जो है मिलेट्स का इस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में पक्का हो जाएगा। कुछ फोटोग्राफ्स हैं कि कैसे स्पेस फ्री की गई है, पूरे कैंपस और सराउंडिंग्स सुंदर हुई हैं। प्लस जो मैंने पहले बोला कि बेटर कनेक्ट विद लोकल पॉपुलेशन की जो इस सब के दौरान हम संपर्क स्थापित कर पाते हैं। और जो इससे प्लान्स हैं हमारे कि इसके बाद क्या किया जाएगा, उसमें कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए हमारा टारगेट है 20% कार्बन फुटप्रिंट हम अपना रिड्यूस कर पाएँ। तो उसके लिए ग्रीन एनर्जी, क्योंकि जो हमारे इलाके हैं जहाँ आईटीबीपी डिप्लॉयड है उसमें ठंड बहुत होने के कारण फॉसिल फ्यूल और ये सब बहुत चीज़ें, चाहे वो केरोसिन हो या कोई भी हो, उस तरह के फ्यूल्स यूज़ होते हैं। लेकिन उनसे चेंज करके अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करने का हमारा टारगेट है। धीरे धीरे हम उस पर जाएंगे। और लोकल वेस्ट डिस्पोजल जो है वो रिड्यूस, रिसाइकल और इस वाले प्रिंसिपल पे हम लोग चलकर इसको अचीव करना चाहते हैं। सस्टेन प्लांटेशन का मैंने बताया सर 4.70 करोड़ प्लांट्स गृह मंत्रालय के एक कैंपेन के तहत हम लोग प्लांट कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमारा जो प्रेजेंस है ग्राउंड पे वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और इसी तरफ हम आगे बढ़ते रहें। और जैसा पहले भी कहा गया कि सर ये कैंपेन 30 अक्टूबर को
कि 31 अक्टूबर को नहीं समाप्त होगी, ये चलती रहेगी। और क्योंकि ये लोगों के एक आदत में भी आ जाता है, एक बार वे इसको शुरू कर देंगे तो ये रुकेगा नहीं, बल्कि इससे और इम्प्रूवमेंट्स ही आएंगे। धन्यवाद सर। Thank you, sir, for sharing the highlights of the Special Campaign 3.0 undertaken by the Indo-Tibetan Border Police. Moving forward, 12,214 sites have been covered under the Special Campaign 3.0 as of now by the Ministry of Road Transport and Highways, and the cleanliness drive has been implemented at various toll plazas also. So, it is my privilege to now request Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Shri Anurag Jain ji, to kindly share a presentation and address all of us. माननीय मंत्री जी, साथी सचिव अधिकारीगण, डीजी ITBP एवं सभी उपस्थित साथियों, जैसा कि आपने मेरे पूर्व वक्ताओं से सुना, ये कैंपेन अक्रॉस द गवर्नमेंट था, तो हम लोग भी ऑब्वियसली इसको उसी स्पिरिट से लागू कर रहे हैं। यहाँ मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसके तहत जिस प्रकार से DAPRG माननीय मंत्री जी MOS और श्रीनिवास जी, जिसको कहना चाहिए कि हम लोगों को रोज़ डेली मैसेज आते हैं, डेटा अपलोड होता है, उसके बाद रैंकिंग निकलती है और रोज़ पता लगता है कि हमारा काम में आज कोई कमी रह गई तो पॉइंट आउट हो जाती है। जी सर, सब नहीं पढ़ते सर, जो हमारे तक आते हैं सर। सर हमारे नोडल ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी सब पढ़ते हैं सर। नहीं सर, वो आपको भेजते हैं। हम लोगों को तो बड़ा मोटा एक ही आता है जो कि टोटल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, तो विच इज़ वेरी यूजफुल, और उस वजह से ऑल ऑफ अस रिमेन ऑन अलर्ट। हमारे विभाग में भी लगभग उसी प्रकार से कार्रवाई की गई। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया गया कि इस बार क्या क्या कार्रवाइयाँ की जानी, क्योंकि तीसरा अभियान था, तो पिछली बार से कुछ क्या चीज़ें और कवर की जा सकती हैं वो आगे आने में स्पष्ट होंगी। मीडिया ब्रीफिंग शुरू की गई माननीय मंत्री जी के स्तर से, उससे शुरू किया गया काम। जो डिस्पोजल है उसको भी पेंडिंग, जो डिस्पोजल्स हैं जैसे और डिपार्टमेंट्स में किया गया उनको हटाया गया। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो पुराने सभी हमारे साथियों ने दिखाई कि किस प्रकार से उन्होंने डिस्पोजल किया, मैं जो दिखाऊंगा इसका सबसे बड़ी बात ये हुई है हमारे डिपार्टमेंट में कि एक आदत बन गई है। नेक्स्ट, लगातार ये पेंडेंसीज कम होती चली जा रही हैं। ये पहला चीज़ ये आती है कि साइट्स, पिछले साल जैसे हम लोगों ने 2400, पहले 83 पे साइट्स थी, फिर 2400 थी, फिर सोचा गया कि हमारी साइट्स आखिर कितनी है, तो इस बार दायरा बढ़ाया गया और ये सोचा गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी तो आफ्टर ऑल हमारे कहने से काम करते, तो उनके ऑफिसेस, उनके जो कैंप साइट्स होते हैं, सभी टोल प्लाजास, ये सब भी हमारे टारगेट में इंक्लूड होने चाहिए। इसलिए नंबर बढ़ के हमारा 13,000 के ऊपर पहुंचा। टारगेट ये रखा गया था कि जो भी हमारे से एसोसिएटेड आदमी हैं उसके ऑफिस में भी सफाई होनी चाहिए, तो उसके चलते ये लक्ष्य बढ़ा और उसमें सफाई का सारा लोग मिलके काम कर रहे हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जो प्राइवेट साथी लोग हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, वो भी पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। ये जो है 3 साल में आदत बनने का परिणाम दिख रहा है। पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस कंटिन्यूसली कम हो रही हैं, नई भी जनरेट होती हैं, बट क्योंकि एक आदत पड़ गई डिस्पोजल करने की, तो उसमें आप देखेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड है। पब्लिक ग्रीवांस में भी डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है और पब्लिक अपील्स जो पेंडिंग थी उसमें भी डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है। और जैसा लक्ष्य रखा गया था, हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर को रहे, तो जो एज ऑफ 30 सितंबर पेंडिंग थी उसको हम लोग 100% अचीव कर पाने की तरफ कोशिश करें। नेक्स्ट, हमारे मंत्रालय में MP रेफरेंसेस मेरे ख्याल से शायद सबसे ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि हमारी सड़क बननी है, हमारी सड़क पर ये इशू है, तो उसको भी काफ़ी देखभाल के जवाब देना पड़ता है। कोशिश ये है कि इस दौरान 30 सितंबर की पेंडेंसी के सभी चिट्ठियों का जवाब दिया जा सके, उसके ऊपर भी प्रयास चल रहा है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, पहली साल से दूसरी साल में काफ़ी कमी हुई थी,
पर थोड़ी कमी हुई थी, पर पिछले एक साल में क्योंकि लगातार काम होता रहा है, आप देखेंगे कि फाइल्स टू बी वीडेड आउट का टारगेट ही अपने आप काम हो गया, और अब जो केवल नई फाइल जनरेट होती है उसी के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, जो इस बार ये यूज़ ऑफ प्लास्टिक तो हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से चालू किया गया था, तो उसी काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और वही काम आगे चल रहा है लगातार। इस दौरान उस पर विशेष फोकस किया गया। बट जो हम लोगों ने कुछ नए काम किए कि देखा ये गया, हमारे को रोज़ सवेरे शिकायतें आती थी कि पॉटहोल है आपकी सड़क में या कहीं सड़क में पानी है, गड्ढे है। तो हम लोगों ने तय किया कि क्यों नहीं हम इसको ज़ीरो कर सकते, कैन वी रीच अ पोजीशन जब हमारे को इसकी एक भी शिकायत सवेरे आनी बंद हो जाए। तो वो तो खैर थोड़ा समय लगेगा, उसके ऊपर पूरी अर्नेस्टनेस के साथ प्रयास शुरू हो गए। लोगों ने आइडेंटिफाई किए कितनी जगह पॉट होल है, जो आइडेंटिफाइड थे उसके लगभग 2/3 इलाके में कवरेज हो चुका है। और हम लोगों ने, पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी वजह से एक सिस्टमिक चेंज कर पाए, हम लोगों को ये पता लगा कि हमारे ढेर सारी सड़कें ऐसी हैं जो किसी प्रकार के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती। जो सड़क हमने नई बनाई या किसी आदमी ने कुछ साल पहले बनाई थी, उसकी मेंटेनेंस उसी की जिम्मेदारी होती है, कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये अब हमारे सिस्टम में है कि 15 साल 10 साल मेंटेनेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पर जो सड़कें पिछले काफ़ी समय से नहीं बनी थी, पुरानी हैं, वो अभी किसी प्रकार के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। तो होता ये है कि पहले सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, शिकायत होती है, उसके बाद हम उसका एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अब आप सुधार दीजिए। तो एक व्यवस्था पूरी लागू कर दी कि एडवांस में सभी सड़कों का एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और वो फिर ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, हमारा ऑफिस जैसे ही हल्की सी खराब कोई सड़क में गड्ढा दिखे वो हल्की हाल दुरुस्त हो जाए। तो उसके चलते हम लोगों को पूरा विश्वास है कि दिसंबर के आखिर तक शायद हम लोग पूरे देश की NH को गड्ढा मुक्त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर इस दौरान जो अक्टूबर के महीने हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। इसी प्रकार से एक दूसरी बात आई कि हमारी सड़कों में एनक्रोचमेंट्स बहुत होते हैं। एनक्रोचमेंट की वजह से भी लोगों को तकलीफ होती है, तो उसको हटाने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हालांकि ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, ये 100% इंश्योर कर पाना, जिस दिन कर पाए बहुत ही बड़ा काम होएगा। पर इसमें भी क्योंकि ये स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस और तमाम लोगों को साथ लेके कार्रवाई करनी पड़ती है, पर इसमें भी पूरी सोच के साथ, उसमें फॉलोअप के साथ प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से जो मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट है, कई जगह स्ट्रीट लाइट्स भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। जब शहरों के बीच से हमारी सड़क जा रही होती है तो उसकी भी शिकायतें आती थी, तो जो शिकायतें आइडेंटिफाई हुई थी उनको भी मेंटेनेंस करने का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से कई जगह शहरों के बीच में ड्रेन्स भी हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे रोड के, तो उनकी विशेष रूप से साफ़ सफाई की गई। तो ये जो नीचे के स्पेशली एनक्रोचमेंट और पॉटहोल फ्री और स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, उनको इस बार हम लोगों ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। मोटे तौर पे इनको तेज करने के लिए जो है हम लोगों ने क्या कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की डीलेयरिंग की जाए, डेलीगेशन किया जाए नीचे पावर का, और डिजिटाइज किया जाए, जिससे कि ये हमारा पूरा सिस्टम बेहतर चल सके। धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind and insightful presentation. Moving forward, I would now like to invite our chief guest, Honorable Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh Ji, to kindly share his valuable thoughts and address the august gathering. Everyone here is waiting keenly to hear your kind address, sir. Thank you. I think this is a continuation of the sequel that we have been following of this periodic review, and then also sharing with the friends in the media and also obtaining their feedback and their inputs, their suggestions about how to move on. We've already been there for the last 3 weeks, and we still have another week or so. But of course, as was rightly mentioned, this is going to be in continuity. It's just a reiteration of our commitment towards the Swachhata campaign launched by Honorable Prime Minister. It's not the end of it. So at the outset, I think I owe to compliment Secretary ARPG, Sri Srinivas ji and his team. And the compliment is so convincing that there is a spontaneous applause.
So that itself is a testimony to the kind of sincere hard work, passion and commitment with which he's been following this, and as was being mentioned by other friends also, a daily follow-up, a daily record maintenance and sharing with others, and also pointing out where we could, improve upon. इसी तरह से Anurag ji has made a presentation, and I think he's looking after a very important, I have also to congratulate him for having taken over Morth very recently, and the visible change after he's come in. And I think he's heading a ministry and a department which has got much to contribute. Along the highways, you could do a lot of innovations, some startup initiatives like growing, green belts on the two sides of the highway, etc., etc. So much can emerge from there for others to follow. DG साहब दयाल सिंह जी ने जिस तरह से बताया भिन्न भिन्न अर्ध सेना बलों के द्वारा किए गए इस दौरान के कार्य का, और I think the paramilitary forces were always a little ahead of all of us, but now that we have to catch up with them, because they were always cleaner than many of us in every way. So I think that's an important cue for us. संजय जी अभी चले गए, लेकिन उन्होंने जो विद्यांजलि का जो ऐप है, मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे साथ शेयर करें. We'll put it across on multiple handles and try to see how best each one of us can use it. Now, I think it's been my unique privilege that I've been witness to this journey of Swachhata campaign right from the day the Honorable Prime Minister announced it from the ramparts of Red Fort on the 15th of August 2014. And at that point in time, he had particularly emphasized on creating toilets for women. And then we have moved on from one level to the other. So when he announced it, I think we were not prepared to actually, respond. We didn't know what it was, many of us. And gradually now we realize how important it was, and the essence of it. The more we've got involved in this, the more we are trying to learn from our own experience. In the first year itself, we had about 4 lakh women toilets. और मैंने जैसे कहा था उस दिन भी कि सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान, तीनों चीज़ें एक साथ महिलाओं को देने का कार्य प्रधानमंत्री के आह्वान से हुआ. सुविधा भी थी, सम्मान भी था, और स्वास्थ्य, because many of, particularly the girl children, refrained from going to school, or the parents forbidden them because the lack of toilet facility, which led to number of infections, etc. और उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेज में आए तो फाइलें क्लियर करना, जंक करना, जैसे कि कहा जाता था कि कहीं कुर्सी है तो उसकी 2 टांगें हैं, मेज़ है तो 1 टांग है, बट वी डिडंट हैव द टाइम. मे बी हम भारत सरकार की सेवा करने में इतने व्यस्त थे कि अगर कोई ग्लास टूट जाता तो वहीं गिरा रहता, उसको उठाने का समय नहीं रहता. कुर्सी टूट जाती है, धकेल के पीछे फेंक देते, दूसरी कुर्सी पर बैठ जाते, क्योंकि काम इतना था कि समय गंवाने का. तो वो भी हमें एहसास दिया गया कि ये भी काम का ही हिस्सा है. अनुराग जी हैज़ टू. तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आया. पहले साल 2014 में हमने लगभग 30,000 फाइलें, because at that time we were not so much into online, नॉर्थ ब्लॉक से ही क्लियर की. And I, as a medical clinician, I shared with the women colleagues, I said, do you realize that all this dust is something that you feed your children with when you go back from here? And that became, gradually, we developed a stake in keeping our premises clean. Now that we have graduated from there, then last campaign we learned the importance of cleaning of electronic scrap and how much of because because of the scrap, we didn't realize how valuable it was. तो वरना हम मोबाइल चेंज कर देते, दूसरा फेंक देते, माउस ख़राब हो जाता तो कंप्यूटर छोड़ देते, तो कहीं माउस है तो स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन है तो कीबोर्ड नहीं है. और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे
हुनर वाले कलाकार हैं कि सारा असेंबल करके बेच सकते हैं, और उनसे भी हमें एक संपर्क करने का मौका मिला, तो हमारी जागरूकता में भी इजाफा हुआ. I quietly asked last year, 2 years back, Srinivas, please give me the address of that place, and I shared it with some of the private households कि वहाँ जाइए, वहाँ पे वो बिक जाता है आपका. Because so I think that also has helped us to create a kind of a social movement out of this. And from this year's experience, what I have inferred, and I would like to share because then you can improve upon or correct me. While all the other ministries are observing, the science and technology ministries sometimes, are occupied with their own agenda. So we have this year also introduced there in a big way, last year also. But I said, when you do it, you have to do it in a scientific way. So come out with some scientific innovation instead of just picking up the broom and cleaning it like others do. And I'm glad, I must compliment in absentia the CSIR Director General, Dr. Kalai Selvi, the Technology Development Board, Mr. Pathak, all of them joined together, and we created a kind of a vehicle, a large vehicle the size of a bus, which has been named Recycling on Wheels. तो जिस तरह से आप छोटा छोटा प्लास्टिक का जाके रिसाइकल होता है, you can actually put in larger objects and articles into that. It could be a plate, it could be even a stool. So it's a huge, I think it's worth seeing. We did put it on the Twitter handles and the other social media. I don't know how many have watched. We'll repeat it for the benefit of others, because the Swachhata campaign is still going on. So it recycles it within short span of time and brings out a raw material which can be then used in the paper industry, even the plastic industry, and so many other places, because the raw material basic is the same. So it disposes of, at the same time creates wealth. So this awareness, I think awareness about the wealth which can be generated from this garbage is something which requires a larger social expansion, because it has the potential of becoming a social movement. Because wherever you find something returning profitably, you get interested. So the second experiment which we have done in the last few months is with the cooking oil. We started this with one of our institutes in Dehradun. We would procure the used oil from the kitchen and then reuse it for creating fuel. So to begin with, our experts there were procuring this oil from the corporation, the municipal corporation, because the government mindset is, trained like that, conditioned like that to deal with the other government's segment. So we are yet, getting used to the public-private participation, which I'm sure in the times to come will become inevitable, because I always keep saying if you have to grow beyond this, you have to grow in a synergized manner. So when I learned that, I suggested to them, instead of procuring it from the corporation kitchen, we'll procure it from the private households, and started giving 20 rupees per kilogram for the used oil. And I said, इसका लाभ ये होगा कि जब आप किसी गृहिणी को जाकर कहेंगे कि बहन जी आप अपना तेल फेंकना नहीं नाली में, मैं सुबह आऊँगा और 20 रुपए किलो के हिसाब से दूंगा, तो उससे दो लाभ होंगे. एक तो there's a tendency sometimes to reuse the cooked oil, more so in the restaurants, sometimes also in the low middle class kitchens. तो एक तो वो, because that is not very healthy, उससे वो बच जाएंगे. दूसरा, एक दिन गुजरेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी बहन कि ये कौन मूर्ख है जो मुझे कहता है नाली में मत फेंकना, नाली में नहीं फेंकने के लिए मैं 20 रुपए दूंगा. तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जागेगी, फिर उसके बच्चों को पता चलेगा, उसके परिवारजनों को. So they'll be able to. So we have very successfully, we are still carrying on with that campaign. We hope to extend it further. So I think incentivizing this garbage, the best way I think ultimately would be when the common person or common citizen realizes that I don't have to throw it because this can fetch me money, then he would not throw it for reasons other than the holy reasons of cleanliness, which of course Gandhiji gave us and we have always tried to follow. But when we develop a stake which is also having a financial and economic angle,
I think that, because now is the time. Maybe in those times, 10, 15 years ago, it was not so. But now the technology is so developed that each and every bit of garbage is worth some return. And I think the next stage, now I have in my mind been thinking for a few days, I'll share it with some people in the scientific fraternity also, a trinity to develop ways to wealth. The trinity of AI plus robo plus drone. So now, like we have this recycling on wheels. We put everything there, gets recycled. Now we can have an artificial intelligence driven module which will segregate the solid waste and the liquid waste. Then we have the robo which would carry this and load it on the drone, the respective drones. One for the liquid waste, other for the solid. And then the drone would automatically fly and carry it to the respective place. So with least use of manpower, you can actually accomplish it. Because we have done it, even in the vaccines we were doing. During lockdown period, you could switch on the drone, it would carry and it would land the vaccine on the rooftop of a dispensary. And we would be watching on the screen how the attendant walks up the roof and collects it. So we have all these things available, only the application point is lacking. The technology is there, but how to improvise the technology, we have to be a little creative. So I mean, this is for my own fancy, I gave it the trinity of ways to wealth. So we can use AI, we can use robo, we have drones. It becomes much more simple. And finally, I think, as was being mentioned by the DG Saab also, the others also, has to become a part of the social behavior. In fact, a part of the cultural behavior, because when you find everything clean, you feel shy of throwing it. I remember way back, somewhere in late 80s, when we were very young, I&B created a group of one of the foreign visits. So I was also one of the, casuals on their role. I was also trying, I didn't make it because I couldn't put the right kind of strings. But anyway, those who came back, when they came back, we wanted to understand from them, because those days going abroad was something very big. So I had come back from Australia after a 2-week visit. So one of the very senior persons in the Mandi house, in the Kashwani, he said, "Sahab, ek kamal ho gaya. हमारे साथ जब हम जा रहे थे वहाँ सड़क पे साथ एक बच्चा चल रहा था और काफ़ी देर तक वो हमारे साथ चलता रहा, तो हमने भी कहा कि बच्चा चल रहा है, और उसके बाद एक जगह पहुँच के उसने हमें हाथ लगाया, उसने कहा कि अंकल प्लीज़ हेल्प मी पुट दिस आइसक्रीम स्टिक इनटू दैट डस्टबिन, बिकॉज द डस्टबिन वाज हैंगिंग ऑन अ पोल। सर साहब ऐसा भी होता है, सब दुनिया में ऐसा भी होता है। कोई बच्चा इतना awakened tha that he was following us for quite some distance to reach that spot where the dustbin had been put on the hanger or wherever, and since he couldn't reach it, he asked us to do. So हमारे यहाँ तो, as Khushwant Singh once said, you find a wall convenient and it's the washroom. So that's behavior, I think, is something, but this will happen when we have all these ecosystem available. Ecosystem A, to facilitate the disposal, because if you don't have the means of disposal, then you can't blame however much the noble intention be. Second, the ecosystem which also generates returns, as I'm saying. And I'm sure a day would come when spontaneously it will dawn on our minds that I'm not throwing this because it's going to fetch me money. So each bit of waste, and therefore and also there's a change in the office image. पहले आप देखते थे पिक्चरों में कि वो दिखाते थे कि वो इतनी बड़ी फाइल है, उसके पीछे साहब बैठे हैं, फिर वो ऐसे ऐसे झांकता था जो आता था, वो दिखते नहीं थे साहब का चेहरा. Now the table is clean, it's everything online. So I think it's given us, and thanks to Prime Minister Modi, he put us in this direction. Maybe this was the need of the hour, but it was not on our priority. And I must compliment Srinivasji. I think we shall be back after a week when we are totally through with this 1 year. And what is significant is that the total revenue generated so far is
776 crore, out of which in the last 20 days itself, that is from the 2nd of October to the 20th October itself, as much as 176 crore. So our pace of generating revenue has also increased, which means now we have learned the skill of making wealth out of this. So in 3 campaigns, that is over the 3 years, we earned 776 crore. Out of that 776 crore, you can say only 600 crore was from the last 2 years. In the last 20 days, we have added on 176 crore. So that means we are also improving on our scale. Now we are looking forward to the saturation points. And this year also, like earlier years, we have already generated 85.75 square feet of space in just 20 days. So our scale has obviously gone up, and obviously it would have gone up because everyone is actively participating in it and realizing the importance of it and realizing also the incentive. So when you associate a stake with a movement, associate an incentive with a movement, and you lay down a target or a goal which is clear, then the movement picks up. And therefore I find this as something which has the potential of our movement. Another thing that I have to compliment, and the cue came from Prime Minister Modi, when on the single day between 10 and 11, the whole country was out doing this Swachhata. So that symbolism also makes a lot of difference, and it acts as a natural adjuvant or a catalyst. So keeping all this in mind, I think to sum up, we are now way ahead from where we started, and we will move on beyond this as well. Thank you. Thank you, sir, for your valuable time and inspiring address. It is your guidance and support which has enabled this department to launch and take forward the nationwide Special Campaign 3.0. I would now like to request Director General PIB, Srimati Shefali Sharan, to kindly conduct the interaction with media. Thank you, sirs, for a detailed roundup of varied activities and results achieved as part of mid-campaign progress review of Special Campaign 3.0. The Pan-India campaign involving all ministries, departments and entities of Government of India, anchored by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, has been highly participative and resulted in tangible improvements. Sir, I'd like to bring to your notice that apart from the media persons present in the hall here, this interaction has been live streamed from PIB platforms and will also be amplified through follow-up press releases, disseminated India-wide in local languages, also through our network of regional and branch offices. I would request the media persons, if they still have any questions, despite all the details given here, most welcome to interact here. Sir, I think your powerful messages of incentivizing garbage, trash to treasure will be widely disseminated. Wants to say something? Acha. That means all of us are on the same page. Ji, sir. Thank you so much for attending here. We would definitely follow it up, and as said by Honorable Minister, we'll be meeting again next week at the end of the campaign, though rightly pointed out that this is an ongoing activity, it doesn't really come to an end. Thank you. Thank you all. In conclusion, I would like to say that let's unite and continue with the due commitment to make the Special Campaign 3.0 a big success. Your presence and cooperation makes this event special, and I am grateful to have each and every one of you here in our midst. I would request our esteemed Special Campaign nodal officers and the dignitaries on stage to kindly join us for a ceremonial photograph with our Honorable Minister in the ground floor lounge. While I will request everyone else to kindly proceed for high tea in the 4th floor. Thank you.
आप 2 मिनट देंगे सर, राजपूत जी विल जस्ट गेट इट ऑर्गेनाइज। एनवीएस सबको करके ऊपर आ जाओगे फिर?